Good evening to all of you. Is this audible, visible, everyone? Audible, visible, everyone, all clear? Yes, please respond. Very good evening. Yes, namaskar. Yes, Somit, namaskar. Somit, very good evening. ठीक अच्छे ताले मैं आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन स्टार्ट करबा। आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट गोटे सुंदर टॉपिक अच्छी डिस्कस करिया पई। This topic is on poverty and unemployment. कौन कहली टॉपिक अबाउट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट बुझेला? ଗୋଟେ ସେକେंड सतीश, जय जगन्नाथ। सतीश प्रणाम। ଗୋଟେ सेकेंड प्रणाम। वेरी गुड इवनिंग ज्योति। कालीर क्लास रु किछि डाउट कहा को? ये सॉल्व क्लियर। वेरी गुड। कालीर क्लास रु किछि डाउट अछि कहा को बुझी गला समस्त को? सो आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ठीक अच्छे, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट आम पॉवर्टी ऊपर डिस्कशन करबा, तापर आसीबा अनएम्प्लॉयमेंट को। गोटे क्वेश्चन समस्त को कि व्हाई पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज इन द सेम चैप्टर। ये सेम चैप्टर रे काहे अछि? हां अच्छा, जेति कि टॉपिक आम इकोनॉमिक्स रो पढ़ी लेनी। आज होची 5th सेशन ऑन इकोनॉमिक्स। चारिटा इंपोर्टेंट टॉपिक आम पढ़ी सारिचे। आज 5th सेशन चारिटा टॉपिक पढ़िला पर इकोनॉमिक्स ऊपर कॉन्फिडेंस आसुची ना नहीं? किछि ना किछि बुझा पडुची कि नहीं? कॉन्फिडेंट लागुची कि नहीं इकोनॉमिक्स करि परिबे? कॉन्फिडेंट लागुची कि नहीं इकोनॉमिक्स कष्ट नुहे? आर यू फाइंडिंग इकोनॉमिक्स इजी? आर यू फाइंडिंग इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग? यस, गुड, बहुत बढ़िया। सो डिस्कशन करिया पूर्व गोटे छोट जिनस आम देखा कि जो दीटा टॉपिक आम गोटे दिन में कहीं रखीचे डिस्कस करिया, ये इंटर रिलेटेड टॉपिक कहीं कोटा कहली पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देखो, लेट्स से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, ताहले तार इनकम नहीं, नो इनकम। यदि इनकम नहीं देन देयर इज नो इन्वेस्टमेंट। नो इन्वेस्टमेंट यदि किसी इन्वेस्टमेंट नहीं, यदि किसी इन्वेस्टमेंट नहीं ताहले श्रिया लेट आसिलो, नो प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट नहीं मुझे तार सोशल एक्सपेंडिचर भी जीरो हो जाओ। सोशल एक्सपेंडिचर माने हेल्थ आउ एजुकेशन।
तापर हेल्थ आउ एजुकेशन सो एजुकेशन आउ हेल्थ न रहिले देयर विल बी नो स्किल स्किल नाही नो स्किल मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट तो ये देखले हाउ पॉवर्टी लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रो अर्थ होची नो इनकम मीन्स no education no health no skill so again poverty now it shows a cycle of poverty it shows a vicious cycle of poverty आपको कौन कहती vicious cycle of poverty this is called vicious cycle of poverty so ये ट्रैप भीतर जे फसी जाए या भीतर से बाहर को आसी पारे बुझिला तला बे हम देखियो पॉवर्टी रो मीनिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी मते कहंतु इन योर व्यू व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी पॉवर्टी कहले कोन बुझछन कोन समस्त कहबे पॉवर्टी रो मीनिंग कोन लुसी प्रणाम व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी इकोनॉमिक्स रो सिलेबस फर्स्ट क्लास रे देइथिली बोधे ऑन नाही जदि न देइथिबी कहयो हम देइ देबी इकोनॉमिक्स सिलेबस न देइथिबी कहयो हम देइ देबी पोर पॉवर्टी माने पोर अच्छा आउ lacking the financial resource okay आउ minimum standard of living नहीं okay आउ बेसिक नीड्स ठीक अछि बेसिक नीड्स कोन बेसिक नीड्स कहा कुआ जाए समस्त हम छोट बेलू पढ़ी आछे खाद्य वस्त्र आ गोटे बासगृह या तो सो फूड क्लॉथ एंड शेल्टर फूड क्लॉथ शेल्टर तो आम गोटे हिसाब करदेले मनकर फूड पाई मासक दरकार 1000 टंका क्लॉथ पाई दरकार 300 टंका शेल्टर पाई दरकार 400 टंका टोटाल मिसिक है केतना 1700 टंका 1700 रुपीस तो आम ये कौन करना गोटे लाइन ड्र करदे लाइन टा केतना 1700 टंकार लाइन केते 1700 लाइन आम गोटे ड्र कर तो या ऊपर को जो माने रहिले जो मानकर इनकम ताको वाला एपीएल एबव दी पॉवर्टी लाइन ता तळ को जो मान रहले ताको वाला बीपीएल बिलो दी पॉवर्टी लाइन कोन कहले गोटे को कहले एपीएल आ गोटे को कहले बीपीएल क्लियर तले एई माने हले दीस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी दीस पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी बुझिला पॉवर्टी कोन एडी फूड क्लॉथ शेल्टर निया हला जोटा बुझेइल सो एग्रीगेट वैल्यू बाहर कर देले हमें कहले पॉवर्टी एटी आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट कहबी देखो मन कर हम देखले टोटल पॉपुलेशन इंडिया रे 140 करोड़ केते 140 करोड़ टोटल पॉपुलेशन एवं एथिरु लेट्स से हम देखले 42 करोड़ दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी 42 करोड़ दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी ये केते परसेंट हैला 42 करोड़ देखले केतला ना 30% याको को जाए हेड काउंट रेशियो सो पोर पीपल एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ताले कोन बोल टोटल पॉपुलेशन न केते परसेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी ताको अगला हेड काउंट रेशियो नाउ क्लियर हेड काउंट रेशियो कोन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मोर poverty is calculated on the basis of income or expenditure कौन poverty टा केमती calculate होती on the basis of income or it is calculated on the basis of expenditure जल्दी कहिए समस्ते
expenditure. Okay. Can you calculate it on the basis of income? Can you calculate it on the basis of income? Some income, some expenditure. Okay, ठीक है. छोटा example now. Let's say there are 4 person A, B, C, D. गोटे फैमिली रे. A रो इनकम मासको 2 लाख, B रो इनकम मासको 20,000, C रो इनकम नाही, D रो इनकम नाही. गोटे फैमिली रो लोक. ताले इनकम अनुसार जदि हमें देखिबा, इनकम अनुसार जदि देखिबा ताले ये बीपीएल ले पळे आसीबो, ये बीपीएल ले पळे आसीबो, ये दी जण एपीएल ले पळे आसीबे एबव द पॉवर्टी लाइन. हैला. बर्तमान जदि हमें एक्सपेंडिचर अनुसार देखिबा, एमानकर इनकम जीरो, सी आउ डी रो, ताले कोन एक्सपेंडिचर नाही. मे बी से छोटो पिला ही पारंदी बा ओल्ड एज पीपल ही पारन, सो दे हैव एक्सपेंडिचर. सो ये समस्त एटी आसीबे कोउतरे नाही, समस्त आसीबे एपीएल एबव द पॉवर्टी लाइन. बुझिला. तो सी आउ डी दे डोंट हैव इनकम बट दे हैव एक्सपेंडिचर. They don't have income but they have expenditure. That's why poverty is determined on the basis of expenditure, not on the basis of income. Is this clear? बुझिला कि नहीं? बुझिला कि नहीं कौन कहली? Clear? Okay. Next. आ गोटे concept को आसीबे हम जहा कहले relative poverty. पूरा सिंपल भाषा रे बुझेबी, बुझो relative poverty कोन. हम गोटे काम करिया, गोटे लिस्ट बनेबा, जो लिस्ट रे इंडिया रो धनी रो गरीब समस्त गोटे रैंक बनेबा. एमदी कर देबो रैंक 1 सबुट धनी, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, एमदी करी 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 कोपन आसी लास्ट पर्यंत ना 140 करोड़ पर्यंत. हैला. जेते लोक अछन समस्त. तले एठी कोन करी हमें टॉप 20% लोक नै जिबा. आ गोटे नवा हमें बॉटम 20%. आ गोटे नवा बॉटम 20%. ताको में डिवाइड कर दवा. टॉप 20% बाय बॉटम 20%. ताको कहा जाय कोन? ताको जे रिलेटिव पॉवर्टी. कोन कहल ताको कहा जाय? रिलेटिव पॉवर्टी. सो एवरेज इनकम ऑफ रिच 20% बाय एवरेज इनकम ऑफ पोर 20%. एवं जो रेशियो आसीबो, दैट रेशियो इज कॉल्ड QIR बा क्वांटाइल इनकम रेशियो. कोन कहली? दैट रेशियो इज कॉल्ड क्वांटाइल इनकम रेशियो. बुझियला? क्वांटाइल इनकम रेशियो कोन? क्वांटाइल इनकम रेशियो बुझिले समस्ते? ताल दीटा कथा कहली पिले देखो. गोटे कहली रिलेटिव पॉवर्टी, गोटे कहली एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी कोथरे मापिलो? मेजरमेंट बाय यूजिंग हेड काउंट रेशियो. मने पडुची हेड काउंट रेशियो. एटा को केमती देखिले? क्वांटाइल इनकम रेशियो. क्वांटाइल इनकम रेशियो. क्लियर? हैला. तापर आसे हम एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. क्वेश्चन जो जो सेक्शन में आसबो सेटिक आसीबा. पॉवर्टी केमती एस्टिमेट करा जाउची? एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया. एनी आइडिया केमती एस्टिमेट करा जाय पॉवर्टी? प्रथम गोटे कमिटी आसला जहा कहले VM दांडेकर एंड नीलकंठ रथ कमिटी 1947 पर. ये न्यूट्रिशन को नेले, कहले न्यूट्रिशन 2250 कैलोरी.
यदि एतिकी न्यूट्रिशन मिलूची गोटे लोक को 2250 कैलोरी ताले तो कहया हमें से कोटी ना एपीएल यदि ताठू कम मिलूची ताले तो कहबा से बीपीएल रे अछि सो 2250 कैलोरी किनिया पे रूरल एरिया रे दरकार हला 180 टंका अर्बन एरिया रे दरकार हला 270 टंका हला 1960-61 नो प्राइस अनुसार 1960-61 नो प्राइस अनुसार तो 1960-61 देखिया को मिला इंडिया रे 177 मिलियन पीपल दे वर पोर एंड 1968-69 देखिया को मिला 216 मिलियन पीपल दे वर पोर बुझिला याको कहला हम दांडेकर भीएम दांडेकर एंड नीलकंठ रथ कमिटी रिपोर्ट क्लियर पूरा सिंपल नेक्स्ट प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट याको प्लानिंग कमिशन अपॉइंटमेंट देले ताको कहा जाए टास्क फोर्स ऑन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड 1989 रे आसिला एवं 1993 रे तार रिपोर्ट देला चेयरमैन थिले आर डीटी लकड़वाला पर कैपिटा डेली इंटेक रिक्वायरमेंट ये कहला केते ना 2400 कैलोरी कोठी ना रूरल एरिया रे 2100 कैलोरी कोठी ना अर्बन एरिया रे डेली एतिकी कैलोरी जो माने अफोर्ड करि पारुचंती से माने एपीएल जो माने अफोर्ड करि पारु नाहंती से माने बिलो दी पोवर्टी लाइन तले कोन कहले प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट ना क्वेश्चन होउची एठी कि अर्बन एरिया रे कोन पई लो कैलोरी एवं रूरल एरिया रे कोन पई हाई कैलोरी इंटेक को हिसाब को निया गला Wait, wait, wait. What is the ground? Yes, very good point. That is the physical labor. कौन देखिया को मिलछ हमको फिजिकल लेबर अधिक ओके नेक्स्ट देखो पॉवर्टी रेशियो बाय प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट ये परसेंटेज ऑफ बीपीएल पीपल देखुची 1973-74 आसला करना 54.9%, 1993-94 आसला 36%, 1999-2000 आसला करना 26.1%. केता कहले 26.1%. तापर आसला 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे एंड पॉवर्टी एस्टिमेशन रिपोर्ट. देखो ये कहा ऊपर फोकस करछि ना ये को जो अर्बन पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन एवं रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन. रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन कितना 356, अर्बन पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन कितने ना 538. क्लियर. नेक्स्ट एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. यार अर्थ कौन? रिकॉल रो अर्थ होउछि हमें किछि दिन पूर्वरु कौन यूज करछे विल रिकॉल द डाटा. पास्ट डाटा को हमें रिकॉल करूछे. कौन करछे? पास्ट डाटा को हमें एठी रिकॉल करूछे. हैला मिक्स्ड रिकॉल. मिक्स्ड रिकॉल अर्थ कौन ना हमें लास्ट 365 डेज रा रिकॉल पीरियड नउछे फॉर 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेस्ड नॉन फूड आइटम पे. का पई कहली फॉर 5 इनफ्रीक्वेंटली परचेस्ड नॉन फूड आइटम पे. कौन ना क्लॉथिंग, फुटवेयर, ड्यूरेबल गुड्स, एजुकेशन, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल सपोर्ट. ये ला नॉन फूड आइटम. ना फूड आइटम हमें डेली बेसिस रे कंजम्पशन करूछे. ये कहला इनफ्रीक्वेंटली माने बारंबार जहा को परचेज करा जाउनी. ताले एही प्रोडक्ट गुडा हम केते बेले किनुछे? क्लॉथिंग, फुटवेयर केते बेले आइदर खराब हे गेले जोता ड्रेस बा किछ गोटे पूजा पर्व परवाणी सेलिब्रेशन ने किनुछे. बुझिला कि नै? सो इट इन्वॉल्व्स poverty estimation using consumer expenditure data for 365 days recall period for 5 infrequently purchased non food items.
तापर आसला गोटे यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड। यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कौन कला ना ये कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डाटा को आनिला के दिन ना फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज रिकॉल पीरियड फॉर ऑल आइटम्स। ऑल आइटम मींस जहां भी किना लास्ट 3 दिन फॉर ऑल द आइटम्स। नेक्स्ट ये जिते गुटे मेथड ऊपर हम डिस्कशन कले ये मेथड मानकर अनेक गुटे शॉर्टकमिंग्स अछि। कौन शॉर्टकमिंग्स? शॉर्टकमिंग्स कौन? फर्स्ट होचे ऑब्सोलेट कंजप्शन पैटर्न। ऑब्सोलेट कंजप्शन पैटर्न अर्थ कौन? मते कहूँ आम जहाँ कंज्यूम करुचे, जहाँ आम कंज्यूम करुचे मत 1400 मसीह जहाँ कंज्यूम करुले 1800 सेम जिन कंज्यूम करुले, 2000 सेम जिन कंज्यूम करुले, 2000 2200 कौन सेम जिन कंज्यूम करवा? नो, कंजप्शन पैटर्न चेंज होची। वर्तमान टाइम पीरियड जब हम देखिए 2025 रे किसी नुआ जिन आम कंज्यूम कर जो आगुरी 2000 मसीह कौन जमी पर डे 1.5 जीबी डेटा, एवं सब नुआ जो प्रोडक्ट आम जो कंज्यूम करुचे कौन कंज्यूम करुचे कह ना शरीर तैयारी कौन पंचभूत तैयारी कौन पंचभूत कहते शरीर पंचभूत तैयारी पंचभूत कौन कौ पंचभूत तैयारी शरीर पिज्जा बर्गर गुपचुप चाट सैंडविच नुहे पिज्जा बर्गर गुपचुप चाट सैंडविच यही 5टा भूत यही पंचभूत हो जाए नुआ। सो आम कंजप्शन पैटर्न भी चेंज हो तो पूर्वर आम जहाँ चेंज करते चेंज सेम जिन यूज करने सो ऑटोमेटिकली ऑब्सोलेट कंजप्शन पैटर्न हो जाए। तो चेंजिंग बिहेवियर आमको देखा मिले कंजप्शन पैटर्न में आमको चेंजिंग बिहेवियर देखा मिले। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट सेकंड पॉइंट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन प्राइस यही समय जहाँ थिला वर्तमान से प्राइस ना प्राइस रे मध्य बहुत चेंज जाइए कौन जाइए प्राइस रे मध्य हमको बहुत चेंजेस देखा मिले। सो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने हमको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने हमको कौन करिया दरकार प्रीवियस मेथड को चेंज करवा दरकार। नेक्स्ट हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर। हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर पूर्व आम एक्सपेक्ट करते एटा किए दब ना इट विल बी गिवन बाय द स्टेट, इट विल बी स्टेट सपोर्टेड। स्टेट सपोर्टेड है यदि स्टेट सपोर्ट न करे ताहले कौन हम कौन कह जदि स्टेट सपोर्ट न करे ताहले कौन हम आमर ओन एक्सपेंडिचर जीव। सो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन भी सी अनुसार डिसाइड हो आम पाखे पैसा अच्छी आम हेल्थ एजुकेशन में खर्च करें जब ना खर्च ये करा। नेक्स्ट पॉइंट तो यही ग्राउंड मान को लेकिन नेक्स्ट गोटे कमिटी आसला जहाँ हूँ तेंदुलकर कमिटी रिपोर्ट। ये यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट हाउसहोल्ड कंजप्शन डेटा बोथ अर्बन एवं रूरल पॉपुलेशन पे आनिला डाटा पब्लिश करियो हाउसहोल्ड कंजप्शन डाटा ये पब्लिश करियो। ताले ये कौन रिकमेंडेशन देले तेंदुलकर कमिटी प्रथम देले ये रिजेक्टेड दिस कैलोरी बेस्ड कंजम एस्टिमेशन कहले जो 2400 कैलोरी 2100 कैलोरी 2250 कैलोरी ये सब को हटाओ ताले कौन आनियो ताले कौन आनियो कहले ना कहले कि खाली आम कैलोरी इंटेक करूने डेली बेसिस हमको आहरी अनेक गुड़े आइटम दरकार लाइक वेजिटेबल नॉन वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स सुगर सॉल्ट स्पाइसेस इंटॉक्सिकेंट्स फ्यूएल क्लॉथिंग ये सब भी आवश्यकता अच्छी। सो आपको हमें देखिए ये कौन ना कैलोरी बेस्ड इंटेक हमको तार आवश्यकता नहीं। सेकंड यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। नेक्स्ट कौन कहली यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट। यूनिफॉर्म पॉवर्टी लाइन बास्केट अनुसार देखा गला कि इंडिया पॉवर्टी लाइन 2004-5 के ना 446 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ इन रूरल एरिया 578 रुपीज पर कैपिटा पर मंथ इन अर्बन एरिया। And then the next is private expenditure. Private expenditure कोथरे ना हेल्थ और एजुकेशन कोथरे कहली प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन एटा बुझी सारछि। प्राइस एडजस्टमेंट प्रोसीजर न्यू मेथड फॉर अपडेटेड पॉवर्टी लाइन्स बुझ प्राइस एडजस्टेड मेथड रा आवश्यकता अछि ना। तेंदुलकर कमिटी फेस क्रिटिसिज्म एते कम टंका जेतल देखला पॉवर्टी लाइन
सो इट फेस्ड क्रिटिसिज्म ताकू ओवरकम करिया पे आउ गोटे कमिटी आसला जहा नाम होची रंगाराजन कमिटी। रंगाराजन कमिटी तेंदुलकर कमिटी फेस्ड क्रिटिसिज्म एंड इट वाज फॉर टेम्पररी टाइम पीरियड। सो रंगाराजन कमिटी वाज अपॉइंटेड। ये नेला कोन ना कैलोरी इनटेक प्लस नॉन कैलोरी इनटेक। नॉन कैलोरी नेला काहाकू न्यूट्रिशन ऑफ फैट कौन कहली ये न्यूट्रिशन ऑफ फैट को नेला। चलो ताले नेक्स्ट पॉइंट को आसियो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। एटा भी समस्त कहि परिबे नाउ ये कमिटी एर भीतर ही क्वेश्चन आसीबो मोस्ट ऑफ द पॉइंट डिस्कस कर देबी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। कौन कहली कॉजेस ऑफ पॉवर्टी निजे को एटा समस्त कहि परिबे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। समस्त कहि परिबे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी कोन कैपिटल डेफिशिएंसी अनएम्प्लॉयमेंट गुड आउ कौन कह समस्त हेवी पॉपुलेशन प्रेशर ना पॉपुलेशन प्रेशर बढ़िले हम पाखे रिसोर्स फिक्स। सो टोटल रिसोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन आको कह जाए कौन पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी। कौन कहली दिस इज कॉल्ड पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी जीला। ना पॉपुलेशन प्रेशर बढ़िले पर कैपिटा रिसोर्स अवेलेबिलिटी कमी जो कि नहीं डेफिनेटली। अनएम्प्लॉयमेंट जदि काम न मिले लोक हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहि बर्तमान अंडर एम्प्लॉयमेंट कौन कैपिटल डेफिशिएंसी जदि कैपिटल शॉर्टेज हो गला इंटरनल रायट मु कहबी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो आप्सपा लगी जम्मू काश्मीर कंडीशन जो आप्सपा लगी पॉवर्टी अच्छी कि नहीं देखा मिलूँ existence of poverty there yes physical disability ill health lack of proper industrialization lack of infrastructure all these things leads to poverty now odisha रे जदि हमें देखिबा ओडिशा हमको नेचुरल कैलामिटी देखिया मिले फ्रिक्वेंट फ्लड कोठी ना ईस्टर्न ओडिशा रे समस्त जानिथिबे प्लस ड्रॉट भी देखिया मिले साइमल्टेनियसली ओडिशा रे कोन ना वेस्टर्न फ्रिक्वेंट फ्लड हाँ मणिपुर हम एग्जांपल then vicious cycle of poverty बुझे सारी then a country is poor because it is poor यार मीनिंग कौन country is poor because it is poor यार अर्थ poor country पाखरे इन्वेस्टमेंट करिया को टंका नहीं so it is poor country कौन करिवो इन्वेस्टमेंट करि परिवनी so automatically it remains poor बुझिला। चलो किसी एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कथा कहूँ जवाहर ग्राम समृद्धि योजना नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम अन्नपूर्णा आईआरडीपी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना मनरेगा ये सब जो ब्लू कलर लिखी सब ओडिशा गवर्नमेंट रो स्कीम। आहार आहार रे कौन होची ना एटा अर्बन पोर मान को मिलुची आहार स्कीम को मान अर्बन पोर बुझेला 5 टंका रे मिल
भात डालमा मिल नथला मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना वुमेन एम्पावरमेंट पाई कौन कहली महिला सशक्तिकरण योजना मनरेगा 1991 रे पायलट स्कीम पर आसला एटा दरकार नहीं हमर एटा मेन स्पेसिफिक हे जो खाली एति कही मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एति मन रखिबे 100 days ऑफ लीगल राइट टू वर्क 100 दिन पर्यंत काम मिले वर्ष को मान को ना एडल्ट मेंबर ऑफ एवरी रूरल हाउस होल्ड तो ये गोटे मनरेगा एक्ट आसले 2005 रे ए अनुसार मिलियो मनरेगा so नेचर ऑफ वर्क कोन नेचर ऑफ वर्क है नेचुरल रिसोर्स को यूज करिया यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स natural resource ro use must be related to management of natural resource then to link scheme with agriculture कौन कहूँ ना ये कहूँ स्कीम को एग्रीकल्चर सहित लिंक करियो चलो यहाँ मनरेगा ऊपर एति जानिया दरकार प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रे नेक्स्ट पॉइंट को आसियो जदि किसी डाउट रहिला को then what are the solutions to poverty what are the solutions to poverty कौन लेक्चर है वॉल्यूम तो ठीक अच्छे मो सामने गोटे चलची बहुत दूर चलची कौन सॉल्यूशंस yes skill development is correct how skill development is correct देखो मो सामने जोटे चलची तार फुल वॉल्यूम दउ जान परियो कौन सॉल्यूशंस देखो yes skill development is correct how skill development is correct देखो डाला स्टूडेंट सामने जोटे चलची तार फुल वॉल्यूम स्टूडेंट भी देखो कितने दूर साउंड हो स्किल डेवलपमेंट ठीक अच्छे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप है कैपिटल फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये सब करि या पर हमें पूर्व डिस्कस करि सारचे या पर हमें पूर्व डिस्कशन करिचे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हमें हियर वी कैन गो फॉर कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन करि परिबा नुहे कैश क्रॉप्स का पई कैश क्रॉप्स प्रोडक्शन करि परिबा टू सेल इन द मार्केट रे बिक्री करिया पई कौन कहली मार्केट रे बिक्री करिया पई वी कैन गो फॉर कैश क्रॉप्स चलो बुझे गला ताले सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी क्लियर एठी हम मते बेसी किछि बुझेवार नाही यदि डाउट अछि ताले पचार डाउट अछि जदि को तापर आसीबी गोटे पॉइंट नेक्स्ट आसीबी अनएम्प्लॉयमेंट टाइप इंपोर्टेंट पॉइंट टिके बुझिबो एठी मन दे अनएम्प्लॉयमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट क्या कहते मत कहल को कंडीशन को कहा जाए अनएम्प्लॉयमेंट को कंडीशन को कहा जाए अनएम्प्लॉयमेंट फर्स्ट गोटे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर हमें डिस्कशन करबा जहा कहे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट टिके बुझिबे एठी मन दे कौन कहली फास्ट डिस्कशन करिया हमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ये को कंडीशन हमको देखा जाए स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किछि कंडीशन अछि कौन कंडीशन को कंडीशन में देखिया मिलियो ना फर्स्ट लेट्स से देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ कौन कहली देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ बा मु कहबी टेक्नोलॉजिकल चेंज टेक्नोलॉजी रे चेंज टेक्नोलॉजिकल चेंज जोटा हमको देखिया मिला केते बेले
जोटा हमको देखा मिला कोविड-19 समय टेक्नोलॉजिकल चेंज केतବେଳେ देखा मिला कोविड-19 समय आमको कैपिटल फॉर्मेशन हो पारुनी यही ग्राउंड मान कर स्ट्रक्चरल चेंज हमको देखा मिले इकोनॉमी रे कौन कह जो हमको इकोनॉमी रे स्ट्रक्चरल चेंज देखा मिलूँ एग्जाम्पल कौन स्ट्रक्चरल चेंज ना मे बी पॉपुलेशन ग्रोथ मे बी टेक्नोलॉजिकल चेंज जमी हमको देखा मिला कहते कोविड-19 समय केतବେଳେ कोविड-19 समय so these are the causes of unemployment when these are the causes that is called structural unemployment लिखिक रखिए कौन कहली ताको तमे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बुझियला नेक्स्ट कैटेगरी को ये वाला फर्स्ट एक नंबर दुई नंबर लेट्स से गोटे लोक गोटे जॉब रे अछि हैला गोटे एग्जिस्टिंग जॉब रे अछि जोटी तार सैलरी होची केते ना 50000 केते 50000 हो तार सैलरी से कौन कला ना जॉब चेंज कर देला जॉब चेंज कला पर त सैलरी बढ़ी के गेला केते ना 70000 केते 70000 हे गेला तार सैलरी बढ़ी जेता सैलरी बढ़ी के 70000 हे गेला छि मन कर आज का डेट रे रिजाइन कर देला को डेट रिजाइन कर देला 30th मे 2025 रे से रिजाइन कर देला एवं रिजाइन कला परे देखला से जोडी जॉब पाई छि नुआ जॉब से कोसी मो पाखरे वर्तमान वैकेंसी नाही मु तुमको देबी 30th अक्टोबर 2025 रे चाकरी देबी देखो 30th अक्टोबर 2025 ये जो मेन टाइम रहला मे रु अक्टोबर पर्यंत ये जो टाइम रहला कोड मे रु अक्टोबर से समय से कौन करियो तार की चाकरी नहीं नो जॉब सो जॉब चेंज समय जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए ताको कौन कहै ना दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन कहै दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बुझी पारले कि नहीं मो कथा कोन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कौन फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर समस्त को तो एटा केते बेले देखिया को मिलला ना सिंपल भाषा रे हम लिखिबा इट इज फाउंड ड्यूरिंग जॉब चेंज केते बेले इट इज फाउंड ड्यूरिंग जॉब चेंज मझी पीरियड बेकार यस ताले गला सेकंड हम देखिले तो सेकंड हम देखिले कोन ना फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एटा समस्त बुझी गले फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कोन नेक्स्ट देखिबा मन कर तुमर गोटे लेबर अपॉइंटमेंट करथला 20 टा लेबर 20 लेबर से माने काम केबे फिनिश करिवे केते दिन रे फिनिश कर देबे काम ना 20 दिन रे फिनिश कर देबे तुमको लागला कि ना 20 दिन नाही मु 10 दिन रे काम कंप्लीट करिया पई चाहूची सेति में तुम कोन कला ना आउ 5 टा लेबर एक्स्ट्रा नै आसिलो 25 टा लेबर नै आसिलो 25 टा लेबर नै आसिलो केते 20 रु 25 लेबर बढ़ाई देला कोन पई ना डे टा को 20 रु 10 करिया पई कोन पई 20 रु 10 करिया पई डे बट देखिया को मिला कि 10 न सरी कि सेम 20 दिन रे ही ता काम सरला केबे ता कामटा से 20 दिन रे ही सरिला से काम 20 दिन रे सरला अरे जो एक्स्ट्रा लोक अपॉइंटमेंट हेले तांकर कोन काम तांकर किछि काम नै तांकर किछि काम अछि कि किछि नै त मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो त कोन कोन त कोन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी त माने एक्स्ट्रा केते ऐड हला एठी केते इटा हला प्रोडक्टिविटी इज जीरो बुझियला एटा को जाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बा प्रच्छन्न बेकारी कोंती ओडिया एटा कोड देखिया को मिले इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर कोडी इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर बुझी पाले कि नहीं मो कथा इट इज फाउंड इन एग्रीकल्चरल सेक्टर सो एटा गला डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कोन नेक्स्ट लेट्स से गोटे लोक पीएचडी करछि पीएचडी कला परे से क्लरिकल काम करूछि हला बा पियन काम करू ताला आको कोन कहबा अंडर एम्प्लॉयमेंट कहबा ता क्वालिफिकेशन टू से कम काम करूछि त कोन कहबा अंडर एम्प्लॉयमेंट कहबा कि नहीं बुझियला ए केस रे वर्क टाइम मैथ किछि काम करियो नेठी चलो ताले अंडर एम्प्लॉयमेंट देखले फ्रिक्शनल देखले एटा देखले अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट देखले एटा ला इंपोर्टेंट आ गोटे कोन कहबी आ गोटे ला किछि भी टाइम किछि लोक थानी पीपल देयर आर सम पीपल दोज हु प्रिफर टू बी आइडियल किछि लोक थानी जे माने काम करिया को पसंद करन आइडियल रहिया को पसंद करन याको कहै जे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोन कोन दियाको दिस इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कोन कहली एमानकर किछि काम करिवार इंटरेस्ट नै सो दे आर इंटरेस्टेड टू रिमेन आइडियल
लास्ट कैटेगरी इकोनॉमी केते भी ग्रो करूना कहीं ना 2 रु 3% हमको अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिले है केते 2 to 3% अनएम्प्लॉयमेंट देखा मिले ताको कहते नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन कहते कौन कहते नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर बुझीगला आ गोटे फर्मुला कह आ गोटे बढ़िया लटे कह शुण मैंने इनकम गोटे लोक फूड रे केते खर्च कर परसेंटेज केते मन कर गोटे लोकर इनकम अच्छी 10,000 केते कहली 10,000 10,000 रु से फूड रे केते खर्च करूची लेट्स से 5,000 खर्च करूची ताले 5,000 हेले तार केते परसेंट हैला ता फूड रे से आधा खर्च करला सो इट इज 50% केते 50% हे गला बुझिला कि नहीं कौन कहली ता इनकम 10,000 फूड रे से खर्च कला 5,000 केते परसेंट 50,000 मन करता इनकम बढ़ी गला 10,000 रु बढ़ी की ता इनकम हे गला 40,000 केते गला इनकम बढ़ी के गला 40,000 बर्तन से फूड रे केते खर्च करिवो ना 5,000 जोटी खर्च करथले से बढ़ाई दो मे बी 12,000 टका से खर्च कला केते 12,000 टका खर्च कला ताले एटी अमाउंट बढ़ी गला बट परसेंटेज केते हला 12,000 हेले 40,000 12,000 केते परसेंट 30% केते परसेंट 30% हे गला ताले एटी देखो बुझिया चेष्टा करो ता इनकम बढ़िला कोडू 10,000 रु 40,000 फूड रे एब्सोल्यूट अमाउंट जति से खर्च करथला बढ़ी गला 5,000 खर्च करथला 12,000 एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज्ड कौन कहली एब्सोल्यूट अमाउंट इंक्रीज्ड बट परसेंटेज जदि एटी हम देखिबा डिक्रीज्ड कौन कहली परसेंटेज जदि एटी हम देखिबा परसेंटेज डिक्रीज्ड परसेंटेज केते डिक्रीज ना 50% थिला 30% हे गला नहीं भलर देखो एटा परसेंटेज डिक्रीज हे गला आगु कहा जाए दिस लॉ इज कॉल्ड एंजेल्स लॉ कौन को देखो दिस लॉ इज कॉल्ड एंजेल्स लॉ दिस लॉ इज कॉल्ड एंजेल्स लॉ क्लियर एंजेल्स लॉ कौन बुझेला समस्त को एंजेल्स लॉ कौन जदि डाउट अछि पचार हैला चलो इटी ने भी इनइक्वालिटी एटी ने भी पर कैपिटा इनकम एटी ने भी पर कैपिटा इनकम बुझिगला एटी जदि कर्व ड्रा करिवि एई भलिया गोटे कर्व आसीयो देखिले को भलिया कर्व आसीयो एई भलिया गोटे कर्व आसीयो इनइक्वालिटी नेली गोटे जगह और जगह नेली कोन पर कैपिटा इनकम एटा टिके बुझो एट ओनली एटी देखो पर कैपिटा इनकम थिला एटी बढ़िला बढ़िला पर कैपिटा इनकम एटी बढ़ुची इंक्रीज होची देखो बुझ पड़ला एटी इंक्रीज होची व्हाइट गारटा एटी बढ़ुची ताले देखो इनइक्वालिटी भी इंक्रीज होची इनइक्वालिटी इंक्रीज पुनी इंक्रीज एटी इंक्रीज ए पॉइंट रे इंक्रीज ए पॉइंट रे इंक्रीज तो एई पॉइंट रे हम देखले मैक्सिमम हे गला तापर जदि पर कैपिटा इनकम बढ़ुची पुनी बढ़िला पर कैपिटा इनकम पुनी बढ़िला पर कैपिटा इनकम पुनी बढ़िला एटी बढ़ी के एई पॉइंट रे मैक्सिमम हला एटी देखो इनइक्वालिटी में कमुची ए लाइन गुडा देखो कमिला एटा कमिला हैला ताले ये कोन कहूची ए ग्राफ रो हम कोन सिखिले ग्राफ कहूची कि पर कैपिटा इनकम बढ़िले इनइक्वालिटी प्रथमे बढ़िबो बट गोटे पॉइंट परे कोन हबो ना इनइक्वालिटी टा रिड्यूस हे जिवो याको कहा जाय दिस कर्व इज कॉल्ड कुजनेट्स कर्व कोन कोन याको दिस इज कॉल्ड कुजनेट्स कर्व
बुझेला कोऑर्डिनेट्स कर्व कौन क्लियर व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स कर्व जहाँ कहूँ सब आसो क्वेश्चन तुम बुझा दरकार भल भाव बुझीगला तो नेक्स्ट गोटे कॉन्सेप्ट कहबी इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ मत कहते इंक्लूसिव ग्रोथ कहले आम कौन बुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ व्हाट डू मीन बाय इंक्लूसिव ग्रोथ आसबि लास्ट को इंक्लूसिव ग्रोथ को मत आंसर देदेवे जल्दी जल्दी केते क्वेश्चन पचार जहाँ जो पॉइंट ऊपर डिस्कस कले तार ऊपर केते क्वेश्चन पचार ना मत व्हाट इज पॉवर्टी क्विक रिस्पांस देबे टिके व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी कौन कहली व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी yes inclusive growth is growth for all good पॉवर्टी कहले कौन बुझे बेसिक नीड्स टा जोटी पॉवर्टी केते प्रकार जल्दी जल्दी कहूँ पॉवर्टी केते प्रकार दुई प्रकार कौन 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 रिलेटिव एब्सोल्यूट वेरी गुड रिलेटिव एब्सोल्यूट मत कहते रिलेटिव पॉवर्टी को मेजर केमती करा जाए कोथरे रिलेटिव पॉवर्टी को हम कोथरे मेजर कले और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को हम कोथरे मेजर कले रिलेटिव पॉवर्टी को कोथरे मेजर करा जाए और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को कोथरे मेजर करा जाए गोटे हेड काउंट रेशियो आ गोटे क्वांटाइल इनकम रेशियो मन पड़ा हेड काउंट रेशियो एंड क्वांटाइल इनकम रेशियो ओके चलो ताले वीएम दांडेकर और नीलकंठ रथ कमिटी कहाँ पर फोकस कले केते कैलोरी 2250 केते कैलोरी 2250 कैलोरी तपर आसला प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट कौन आसला प्लानिंग कमिशन एक्सपर्ट ग्रुप रिपोर्ट दार चेयरमैन थे डीटी लक्कड़ वाला किए डीटी लक्कड़ वाला तो ये नेला पर कैपिटा डेली इनटेक केते 2400 2100 2400 रूरल ना अर्बन 2400 कैलोरी टा रूरल ना अर्बन कोड ना ताले ये देला केते 1973 74 55% 93 94 36 देन 26% और असला 61st राउंड ऑफ एनएसएसओ सर्वे नुई की ये रूरल पर कैपिटा मंथली कंजम्पशन ला 356 अर्बन पर कैपिटा ला 538 है ना तब असला एनएसएसओ मिक्स्ड रिकॉल पीरियड क्लॉथिंग फुटवेयर ड्यूरेबल गुड्स एजुकेशन ये सब ने लाइट देन प्लानिंग कमिशंस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड कौन कहली प्लानिंग कमिशंस यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड it involves estimation of poverty using consumer expenditure data for 30 days recall period okay shortcomings गुड़ा को डिस्कशन कर देली चलो तब रैंगाराइजेशन कमिटी कहाँ पर फोकस कले
कैलोरी प्लस नॉन कैलोरी दीटा जाक ये इनक्लूड है क्या कहले रैंगार्जन कमिटी कैलोरी प्लस नॉन कैलोरी इंटेक दीटा जाक को इनक्लूड कर नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्विक रेस्पॉन्स जल्दी कहबे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी हाँ अनएम्प्लॉयमेंट गुड आउ गुड पॉपुलेशन ग्रोथ नुहे कि ओडिशा रे पॉवर्टी रो कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन ओडिशा कॉजेस ऑफ पॉवर्टी ओडिशा रे फ्लड आउट ड्रॉट कोठी हुए फ्लड कोठी और ड्रॉट कोठी ओडिशा रे फ्लड कोठी और ड्रॉट कोठी हुए वेस्ट और ईस्ट कहली बा फ्लड टा कोठी फ्लड टा ईस्ट वेस्ट रे ड्रॉट ओके चलो ओडिशा रे किछि स्कीम रो ना कहि परिबे पॉवर्टी रिडक्शन पई वेरी गुड पॉवर्टी रिडक्शन पई किछि स्कीम रो ना 40 योजना ओके एसएच मते कोन दो जो मनरेगा रे केते दिन काम मिले लीगल राइट ऑफ वर्क केते दिन पई मनरेगा रे लीगल राइट ऑफ वर्क केते दिन पई 100 days वेरी गुड ओके ताले एगोटा जो बुझी गला नेक्स्ट पॉइंट को हम आसले अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रे हम देखले पॉपुलेशन ग्रोथ टेक्नोलॉजिकल चेंज पई अनेकर ऑल ऑफ सडन आईटी पळे आसला इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो माने आईटी रो यूज जानि नथले से माने काम करि पाले नि किछ से माने किछ काम करि परिबे करि पाले तो टेक्नोलॉजिकल चेंज कोविड 19 पॉपुलेशन ग्रोथ या पई जोटा हला तक हम कोन कहले स्ट्रक्चरल चेंज और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हला देन जॉब चेंज समय जोटा मिलिला तब कोन कहले जोटा जॉब चेंज समय मिले तब कोन कहंदी माने जो अनएम्प्लॉयमेंट देखा जाए दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट माने पड़ला फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ओके गोटे इकोनॉमी केते भी डेवलप होना कहीं किछि ना किछि लोक आइडियल रहइक चाहिबे सेमान चाहिबेनी काम करियो तां कोन कुआ जाय किछि लोक चाहिबे हम काम करिवुनी तांको कोन कुआ जाय दे आर कॉल्ड एज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट well they are known as voluntary unemployment हैला तुमरा पीएचडी करतन किछि लोक से माने क्लरिकल काम कले पियन काम कले ता की अनएम्प्लॉयमेंट कुआ जिवो ओके तले एंजेल्स लॉ रे हम कोन देखिले ई लॉ टा इनकम बढ़िले फूड ऊपर जति खर्च सेटा बढ़ुची एब्सोल्यूट अमाउंट बट परसेंटेज टा कमी जाउची ता कहले एंजेल्स लॉ
देन पर कैपिटा इनकम एवं इनइक्वालिटी भितर जो कर्व देखा जाए कौन कहते पर कैपिटा इनकम एवं इनइक्वालिटी जो कर्व देखा जाए कौन कहते कर्व व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स कर्व वेरी गुड चलो ताले बुझीगला नेक्स्ट इंक्लूसिव ग्रोथ कौन मु कहितली काली इंडियन कांसेप्ट रे हम कौन देखुतले को मानु को इंक्लूड करबा दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कांसेप्ट ऑफ ग्रोथ फॉर एग्जांपल एससी एसटी ओबीसी वुमेन चिल्ड्रन हला ओल्ड एज पॉपुलेशन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ट्राइबल पॉपुलेशन एमान को सब इंक्लूड करबा को कौन कहा जाए दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ बुझीगला ताले इंक्लूसिव ग्रोथ काहे के दरकार डिस्पैरिटी रिड्यूस करिया पई इनइक्वालिटी रिड्यूस करिया पई रीजनल डिस्पैरिटी कमिया पई एवं डेमोग्राफिक डिविडेंड रो प्रॉपर यूटिलाइजेशन पई डेमोग्राफिक डिविडेंड कोन डेमोग्राफिक डिविडेंड रो अर्थ जो मानकर बयस 15 नु 65 हैला 65 या भीतर अछि ताको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड this is all about the young population and this is all about the young population से इंडिया को यंगिस्तान बोली कहा जाए हिंदुस्तान इज कॉल्ड यंगिस्तान बिकॉज ऑफ दिस यंग पॉपुलेशन 15 नु 65 भीतर हम पाखरे बहुत लोग अच्छा क्लियर एबे कोन तो कोन डाउट रहला या पर क्वेश्चन आसले करि परिबे समस्त ना करि परिबेनी किछि भी टाइप रो क्वेश्चन आसु समस्त करि परिबे पांचटा इंपोर्टेंट टॉपिक पढै सलेन मु इकोनॉमिक्स हबो कि नहीं डाउट पचार डाउट जदि नाही किछि ताल मते को आज कोन कोन पढिला हम क्लास कोन सिखिला आज रो क्लास रो ये सब नोट्स को डाउनलोड करके नौचंदी समस्ते कि नहीं नोट्स समस्ते डाउनलोड करी नौचंदी ताले आज रो क्लास रे कोन सिखिले मते टिके कहले क्विक पॉवर्टी पॉवर्टी हम देखले कोन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी आउ देखले रिलेटिव पॉवर्टी आउ कोन देखिलो मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइक क्वांटाइल इनकम रेशियो नहीं हेड काउंट रेशियो बुझिला आउ कोन देखिले मनरेगा कौन देखिले मनरेगा देखिले अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सब इंपोर्टेंट एटा अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स देखिले एंजेल्स लॉ देखिले कुजनेट्स कर्व देखिले ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रे दे देबी श्रिया इकोनॉमिक्स सिलेबस नेक्स्ट क्लास दे देबी तमा ना लोटे इकोनॉमिक्स रो सिलेबस डिस्कशन क्लास नै आसीबी जोत्र सिलेबस पूरा डिस्कस कर देबी कोन पढिबे कोन नै कहि दे ठीक अछि चलो ई सब पढिला आज आपको पढिबो समस्त पढि के आसीबो नेक्स्ट ठीक अछि एबे इकोनॉमिक्स सहज लागुची ना कष्ट लागुची इकोनॉमिक्स सहज ना कष्ट सहज समस्त राजी हाँ सहज लगुच
ठीक अच्छे बहुत बढ़िया सो लेट्स माइंड अप दिस सेशन पुणी काली देखिबा जहाँ अछि आज पई एतिक सतीश बुझे जाऊ तो बहुत बढ़िया ठीक अच्छे बुझेगा कि नहीं जनइबे कमेंट रे दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट चलो पुणी काली देखिबा आउ किछि नुवा टॉपिक काली आउ गोटे इंपोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं आसीबा पुणी डिस्कशन करिया दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट आउ जहाँ अछि काली थैंक यू ज्योति लुसी इस्तर सीता सतीश थैंक यू एवरीवन गुड नाइट